This double-striatal sac sign is seen at approximately 5 weeks of pregnancy and represents the inner rim of chorionic villi, surrounded by a thin rim of fluid in the abdominal cavity, which is surrounded by the echogenic deciduovera. ठीक है? The double-striatal sac sign is highly reliable for intrauterine gestational sac. Question number 34. What risk factor on the clinical details makes the patient more at risk for developing endometrial carcinoma? Hypertension. ठीक है? ये भी याद रखना है कि जो है hypertension puts the patient at more risk for endometrial carcinoma. Hypertension puts the patient at more risk for endometrial carcinoma. Hypertension puts the patient at more risk for endometrial carcinoma. भाई कोई ऑप्शन चांस नहीं बन रहा है. क्वेश्चन भी इस तरह है. क्वेश्चन 34. A 35-year-old parent with a post-menopausal bleeding comes for ultrasound for pelvic ultrasound examination. What risk factor on the clinical details makes the patient more at risk for developing endometrial carcinoma? तो ये है कि hypertension. ठीक है. Question 35. A 55-year-old postmenopausal bleeding. Okay, postmenopausal patient has postmenopausal bleeding. ठीक है. Pelvic ultrasound shows endometrial thickness of 8 mm. Most appropriate next step in management. Refer to gynecologist for papillary biopsy or hysteroscopy. ठीक है. What is ये कि question number 5. Measurement of endometrial thickness postmenopausal in a patient not on HRT is less than 5 mm. ठीक है. Normal endometrial thickness जब patient post menopausal है less than 5 mm. ठीक है. अगर patient is on HRT then it should be less than 8 mm. और अगर patient endometrial thickness 8 mm है तो और he also has postmenopausal blood bleeding तो हमें endometrial carcinoma suspect करना है और we have to refer him to gynecologist for papillary biopsy or hysteroscopy. ठीक है. Question number 35. Because she is not an HRT, when not an HRT then it should normally be less than 5 mm. लेकिन जब 8 mm हो less than not तो ये तो फिर हमने biopsy करनी है endometrium to look for endometrial carcinoma. ये normal rules है. Question 36. What signal would you expect normal myometrium, junctional zone endometrium to return on T2 variant images? ठीक है. Medium, low, high. Myometrium medium, junctional zone low, endometrium high. ठीक है. ये है medium, low, high. Myometrium medium, junctional zone low, endometrium high. ठीक है. Myometrium medium, junctional zone low, endometrium high. ठीक है. Question number 38. Grade 2 endometrial adenocarcinoma. There is cervical invasion but no further spread. What will be the correct staging? Stage 2. ठीक है. इससे याद करो कि स्टेज 2 तो सी से दो मतलब ये सी है तो सी और cervix only involved. So grade 2 endometrial carcinoma has cervical invasion but no further spread. ठीक है. इसकी अपनी स्टेजिंग है. ये एंड में रिवाइज करेंगे लेकिन याद करो कि सी तो cervix only involved और ये कि जो 2 अगर हम सी को इस तरह लिखे देखो सी है ना ये सी है. ठीक है. अगर हम सी को इस तरह लिखे 1 2 तो स्टेज 2 और फिर सी बन गया ना. सी बन गया ना. फिर ये दो हाथ हो गए इसके तो स्टेज 2 सर्च ऑन इन्वॉल्व. बाकी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की स्टेजिंग हम दो रफ ये देखते हैं. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की स्टेज. ठीक है. या तो स्टेज 1 ट्यूमर कन्फाइंड टू यूट्रस, स्टेज 2 cervical stoma invasion, stage 3 tumor invasion to serosa or adnexa,
स्टेज 4 ट्यूमर वेरिएंट टू ब्लैडर और म्यूकोसा, ठीक है, ये आसान है। एलिमेंट कार्सिनोमा स्टेजिंग, स्टेज 1 ट्यूमर कन्फाइंड टू यूट्रस, स्टेज 2 सर्विकल स्ट्रोमा इन्वेजन, स्टेज 3 इन्वेजन टू सिरोसिस एग्नेक्सा। इस शॉर्ट करके हम लिख लेंगे, ठीक है, फिर ये बार बार रिवाइज करेंगे। स्टेज 4 ट्यूमर वेरिएंट टू ब्लैडर और बॉल म्यूकोसा, ठीक है। एलिमेंट कार्सिनोमा स्टेजिंग, स्टेज 1 कन्फाइंड टू यूट्रस, स्टेज 2 सर्विकल स्ट्रोमा इन्वेजन, स्टेज 3 tumor invading to cirrhosis or adnexa, and stage 4 tumor invading to bladder or bowel mucosa. Yeah, breast metastasis. Question number 338. Ultrasound shows a large ectopic mass with several small fluid-filled spaces within the uterus, with most likely diagnosis gestational tuberculosis. ठीक है? Ultrasound shows large ectopic mass with several small fluid-filled spaces within the uterus, most likely diagnosis gestational tuberculosis. ठीक है? Ultrasound here shows ectopic mass, ठीक है, within inside the uterus with multiple such spaces within it, that was gestational tuberculosis. ठीक है? Question 39. Prostate cancer at MRI. Which of the following features is suggestive of stage 3 rather than stage 2 disease? ठीक है? Extracapular extension. Prostate cancer में जब extracapular extension होती है तो मतलब stage 3 हो गया, T3, ठीक है? ये थोड़ा सा रफ है, वो देखते हैं prostate cancer की staging. Prostate cancer stages, ठीक है? Stage 1 cancer is small and only in the prostate. Stage 2 the cancer is large and maybe in both of the prostate, but still also in the prostate. Stage 1 cancer is only in the prostate, stage 1. Stage 2 in both of the prostate. Stage 3 cancer is spread beyond the prostate to the closed lymph glands or seminal vesicles. And stage 4 cancer is spread to other organs, to the bone. तो ये क्या भी रहा है कि जो है what are foreign features of stage 3 and stage 2 disease? Extracapular extension, ठीक है? Stage 2 में stage 1 में होता है confined to prostate, stage 2 and both of the prostate but still confined to prostate. तो जब extracapular extension होती है तो मतलब seminal vesicle involved होता है, तो stage 3 बन गया. So stage 1 confined only in prostate, stage 2 in both of the prostate but only in prostate, stage 3 cancer spread beyond the prostate. तो ये क्या भी रहा है कि जो है what are foreign features of stage 3 and stage 2 disease? Extracapular extension, ठीक है? Stage 2 में stage 1 में होता है confined to prostate, stage 2 and both of the prostate but still confined to prostate. तो जब extracapular extension होती है तो मतलब seminal vesicle involved होता है, तो stage 3 बन गया. So stage 1 confined only in prostate, stage 2 in both of the prostate but only in prostate, stage 3 cancer spread beyond the prostate caused by lymph gland, lymph nodes or seminal vesicles, and stage 4 cancer spread to other organs. ठीक है, आसान है. Question number 40. Which of the following features suggest post-biopsy hemorrhage rather than prostate cancer tumor? High signal or T1 weighted images in the peripheral zone. ठीक है? ये बायोप्सी, ये MCQ ये है कि पेशेंट होता है, उसकी बायोप्सी होगी प्रोस्टेट की, तो फिर बायोप्सी के बाद जब हेमरेज होती है ये कैसे पता चलेगा हमें कि बायोप्सी के बाद हेमरेज है या प्रोस्टेट कैंसर है? तो ये कि हेमरेज में ब्लड होती है, ब्लड T1 पर हाई होता है, तो और बायोप्सी हम करते हैं पेरिफेरल जोन में प्रोस्टेट में. High signal or T1 weighted images in the peripheral zone means post-biopsy hemorrhage rather than prostate cancer tumor. Question number 41. Question number 41. Ultrasound demonstrated 1 to 2 mm hyperechoic multiple non-charging foci throughout both testes. With the following most likely to be associated with this finding? Testicular germ cell tumor. ठीक है? इसको कहते हैं 1 to 2 mm hyperechoic multiple non-charging foci. ये testicular microlithiasis है. ठीक है? जी, देखो testes on ultrasound demonstrated multiple hyperechoic foci called testicular microlithiasis. It shows testicular germ cell tumor. It is most likely to be associated with testicular germ cell tumor. ठीक है? It is associated with testicular germ cell tumor या कहीं seminoma testis भी है लेकिन testicular germ cell tumor के साथ है. Question 42. 42-year-old man scored an ultrasound demonstrated. Question number 43. Ultrasound shows well-defined two similar round lesions in the region of the right testes. Whereas rings of alternating hypo and hyperchoic echogenicity. No blood flow can be demonstrated on color Doppler imaging, where most likely diagnosed epidermitis. ठीक है? ये कह रहा है कि जो
A rounded legend see on the right testes, ठीक है, with rings of hyperanechoic shadows to diagnose क्या है epidermolysis, ठीक है, epidermolysis आसान है. Next question number 44. 4 centimeter mass on the left testis, which was confirmed to be a metastasis from his primary malignancy. What is the most likely site of primary malignancy to the testes, ठीक है, lung, ठीक है. सबसे पहले अगर ऑप्शन में आ जाए टेस्टिस को जो मेटास्टेसिस है प्रोस्टेट है, फिर लंग है, फिर किडनी है, ठीक है. लेकिन प्रोस्टेट नहीं है तो ऑप्शन में, तो आंसर लंग है, ठीक है. सबसे कॉमन मेटास्टेसिस टू टेस्टिस है, लंग है. पहले प्रोस्टेट फिर लंग फिर किडनी, प्रोस्टेट फिर लंग फिर किडनी. ये भी एक्सप्लेन में भी ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 44. Yeah. Metastasis, the testes are more common than seminoma apparent over the age of 50 years. Most common sites in order of frequency are prostate, lung, kidney. Prostate, lung, kidney. Metastasis to the kidneys, ठीक है, to the testes, prostate, lung, kidney, prostate. Question 45. Ultrasound shows an 8 millimeter well-defined anechoic area in the head of the right epididymis. What is the most appropriate next step in the patient management? Discharge the patient back to GP with no follow-up, ठीक है. He has 8 mm well-defined anechoic area in the head of the right epididymis. ये epididymal cyst है, ये benign है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बस पेशेंट को डिस्चार्ज करो, कोई फॉलोअप नहीं है. Question number 46. Which of the following ultrasound appearances is incompatible with the diagnosis of testicular torsion? Normal graceful appearance of both testes, ठीक है. Testicular torsion में जो होती है अगर डॉपलर आ जाए तो एब्सेंट डॉपलर है, लेकिन ये कह रहा है कि नॉर्मल ग्रेस्केल अपीयरेंस ऑफ बोथ टेस्टिस. ग्रेस्केल का भी अगर आप देखोगे तो जिस टेस्टिस में टॉर्शन हो उसमें आपको हाइपोइकोइक नजर आएगा ना, हाइपोइकोइक था. लेकिन ये क्या है जब दोनों नॉर्मल हो ग्रेस्केल अपीयरेंस तो इज नॉट इनकम्पेरेबल डायग्नोस्टिक, मतलब नॉर्मल स्टडी है, इट्स नॉट टेस्टिकुलर टॉर्शन. Question 47. Ultrasound shows a 3 centimeter heterogeneous solid mass in the left testicle. 3 centimeter heterogeneous solid mass in left testicle. What is the most appropriate next step in his management? चेंज सीटी एग्जामिनेशन, ठीक है. क्योंकि जब 3 centimeter heterogeneous mass इन द लेफ्ट टेस्टिकल है तो हम मेटास्टेसिस सस्पेक्ट करते हैं और स्टेजिंग करने के लिए हम सीटी स्कैन करते हैं. अभी पूरी एमसीक्यू पढ़ते हैं. 47. A 26-year-old man presented with a testicular lump and was referred by his GP for ultrasound examination. This demonstrated a 3 centimeter heterogeneous solid mass in left testicle. What is the most appropriate next step in his management? A staging CT examination, ठीक है. वजह क्या है क्या Change CT examination of the chest, abdomen, pelvis is the most appropriate next step following urological referral, ठीक है. Referral और इसकी patient also is 26-year-old man with testicular lump और ultrasound 3 centimeter heterogeneous solid mass left testicle. तो बस staging करते हैं ये रटा करें. बाकी कुछ एक्चुअली एमआरआई नहीं करते हैं staging के लिए, रिपीट अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन भी नहीं करते हैं, फोनिक एंटीबायोटिक कराते हैं, पोन्सिटिग्राफी भी नहीं करते और बायोप्सी भी नहीं करेंगे, ठीक है. Question 48. Diagnosis of extraperitoneal bladder rupture is made. Where is the bladder most likely to have been ruptured? Extraperitoneal bladder rupture and at the base of the bladder, ठीक है. ये है bladder rupture, extraperitoneal, intraperitoneal. Extraperitoneal is more common, 80%. Intraperitoneal less common, 20%. Extraperitoneal bladder rupture occurs at the bladder base. Extraperitoneal occurs at bladder base. Intraperitoneal bladder rupture occurs at the bladder dome. Extraperitoneal rupture occurs at bladder base. Intraperitoneal rupture occurs at bladder dome, ठीक है. ये याद करें. फिर जो फ्लोरोस्कोपी पर आप